अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x4 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसको हम रिजॉल्व करेंगे एज ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स ओवर ई प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर वी गेट x4 plus c x square plus x plus 1 is equal to a into एक्स स्केयर प्लस वन का होल स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्केयर प्लस वन प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स प्लस वन and by taking x square x cube and x common we get x4 plus c x square plus x plus 1 is equal to x4 plus bx cube plus 2a plus c plus d into x square plus b plus d plus c into x plus a plus c plus e. Now by comparing coefficients of x4 x cube x square and x and constant of equation 2 we get, by comparing x4 we get a is equal to 1, and by comparing x cube we get b is equal to 0, and by comparing x here we get uh, 1 is equal to c plus d. Now by comparing x we get 1 is equal to d plus c, and now by comparing constants we get 0 is equal to c plus e. From a we can get d is equal to 1 minus c, so put it in b we get e is equal to c, or 0 is equal to minus c plus c. At c and d we get e is equal to 0, so c is also equal to 0 because e and c are equal. Put in a we get d is equal to 1. Now put values of a, b, c, d and e in equation 1. We get x4 plus x square plus x plus 1 over x plus 1 into x square plus 1 का whole square is equal to 1 over x plus 1 plus 0 x plus 0 over x square plus 1 plus x plus 0 over x square plus 1 का whole square, which is equal to 1 over x plus 1 plus x over x square plus 1 का whole square. So question number 2 हमारा complete. Hopefully आपको समझ आ गया होगा. If you have any doubt you can ask in comment section. Thank you.